A very good morning to all of you. ओके तो कल हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था जेई मेंस 2014 का। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है okay, so our first question is the question from JEE Mains 2015, and the question is the normal to the curve, and the curve is given the normal to the curve x square plus 2xy minus 3y square is equals to 0. 811. This is a question from 2015 JEE Mains. Now the options are like this. A option is does not meet the curve again. B option is meets the curve again in the second quadrant, meets the curve again in the third quadrant, and meets the curve again in the fourth quadrant, right? So these are the options for the question, and the question is the normal. We want to find the normal of this curve at which point? At point 11. At point 11 we want to find the normal of the curve, right? So for finding the normal of the curve, first of all we want to know the slope of the normal at 1 1. So for finding the slope of the normal, we require the slope of the tangent. After finding the slope of the tangent, we will reciprocate it and put the opposite sign so that the slope will be a normal slope, right? So now differentiate this term with respect to x. We will get here x square is 2x plus 2x at outside, derivative of y is dy by dx, plus y is at outside and derivative of 2x is 2 minus 6y into dy by dx is equal to 0. Now at which point? At point 1 1. It means the value of x is 1 and value of y is also 1. So substituting x equals to 1 and y is also equals to 1. Therefore here it is 2 plus 2 into dy by dx plus 2 minus 6 into dy by dx is equals to 0. 2 minus 6 is 4, but minus 4 goes to right hand side, becomes plus. So 4 dy by dx is equals to 2 plus 2 is 4. Therefore dy by dx is equals to 1. If dy by dx is equals to 1, this is what? This is the slope of the tangent. Therefore what is the slope of the normal? Minus 1. Slope of the normal is opposite and reciprocal of the slope of the tangent. So it is slope of the normal is equals to minus 1. Now we want to find the equation of the normal. What is the equation of the normal?
equation of normal y minus y naught is 1 is equal to m is the slope is minus 1. We are using here point slope equation, y minus y naught is equals to m into x minus x naught. Now y minus 1 is equals to minus x plus 1. It means x plus y is equals to 2. X plus y is equals to 2. Now we want to find the normal of the tangent to the curve at 1 1 meets again at which point, barabar? So if we have a curve like this type of curve we have, and we are going to draw one tangent here, and what is the normal is looking like this. So this is the normal. This normal touches the curve again at this point and this point also. So we want to find the point of intersection. We want to find the point of intersection of normal and curve. Point of intersection of normal and curve. We know one point of intersection is 1 1, but another point of intersection we want to find, because they are asking for meet again at which quadrant, right? So we are going to find the point of intersection of this normal and this curve, right? So for solving the equation of normal and curve, we are going to put y is equals to 2 minus x. Y is equals to 2 minus x in which equation? Y is equals to 2 minus x in equation of curve, right? So substituting y is equals to x square plus 2x, y is equals to 2 minus x, y is equals to 2 minus x, minus 3, y is equals to 2 minus x, whole square equals to 0. Therefore x square plus 2 to the 4x minus 2x square minus 3 into bracket 4 minus 4x plus x square is equals to 0. X square minus 2x square is equals to minus x square. Now plus 4x multiplying minus 3 into the bracket, we will get here minus 12 minus minus plus 12x, and it is minus 3x square is equals to 0. It means it will be minus x square minus 3x square is minus 4x square. 4x plus 12x is equals to 16x, and it is minus 12 equals to 0, right? All the terms is considered okay. So now taking minus 4 common, so the remaining terms are x square minus 4x plus 3 is equals to 0. Therefore minus 4 goes to right hand side, becomes 0. So factorize this 3 in the terms of middle term such that the summation of middle term is by getting by the factorization of the last digit. So 3 ones are 3. So 3 ones are 3. It means x minus 3 and x minus 1 equals to 0. Minus 3 minus 1 becomes minus 4. Therefore the value of x is equals to 1 and x is equals to 3. If we substitute x is equals to 1 here, x is equals to 1 here, y is equals to 2 minus 1 is 1. But if we substitute y x is equals to 3 here, we will get y is equals to 2 minus 3 equals to minus 1. So the point is 3 comma minus 1. You can see here one point is 1 1 and another point is 3 comma minus 1. So another point is 3 minus 1. So the normal meets again the curve. The curve is looking like this. The normal meets again the curve at point which plus 3 minus 1. This point is 1 1. So 3 minus 1 point is lying in which quadrant? X is positive, y is negative. X positive, y negative. Fourth quadrant, right? So the answer for this question is in the fourth quadrant. So the normal intersect the curve again at 3 minus 1, right? So this is the answer for the question.
Take a screenshot of this. Okay, so let's try to solve the next question. The next question is IIT JEE Mains 2016 problem, which we already solved in my video lecture. In the playlist, you can check it out. The normals and tangent JEE questions, the normals and tangent. In that video, you can find out the JEE Mains 2016 question. And the problem number 32 is the application. There is an application of integration. So we are just skipping that question. We'll see it later. Now, problem number 34. And this 34th problem is came in JEE Mains 2016. So you may be completed with this question. Okay, so next question. So our next question, problem number 34 is a wire of length 2 units cut into two parts which are bent respectively to a square of side x units and a circle of radius r units if the sum of the areas of the square and the circle so formed is minimum. So here this is a type of a question that a wire length 2 units, so total wire length is 2 units, so total length of the wire is 2 units given. We are going to cut this into two parts. We are going to cut this into two parts such that that are bent into a square. इसमें से हम क्या बनाएंगे, x square बनाएंगे और another one is a circle, right? So इसमें से एक square बनाना है और एक circle बनाना है. The side of the square is x units. The side of the square is x units, and the radius of the circle is r units. And our target for this question is function of x, or you can say function of r, will become the sum of the areas. Sum of areas of circle and square. We want to minimize that function, right? So first of all, we have one circle and one square. So the total length of, it means the total perimeter of square plus circle is equals to 2 units, because it is made from this wire, right? So the total length, you can say total perimeter is equals to, total perimeter is equals to 2 units, right? Total perimeter is equals to 2 unit. ऐसा क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में भी सोल्व किया था, सेम टाइप का क्वेश्चन था. ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या होता है इसमें, राइट? सो टोटल पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स. दिस इज द 4x प्लस this is 2 pi r is equals to 2. It means 2x, 2 is common and cancel, is equals to 2. It means x is equals to, here it is 1, right?
because we are dividing whole equation with 2. So it is 1 minus pi r by 2. 1 minus pi r by 2. So this is the value of x. So what is our target? Our target is sum of the areas. Sum of the areas means area of the circle plus sum of areas. Area of the circle. What is the area of the circle? Pi r square and x square. Area of the square is x square and area of the circle is pi r square. So this is our function in terms of radius. We are going to convert this in terms of radius, right? So here it is 1 minus pi r divided by 2 whole square plus pi r square. So this is our function in one variable, in terms of one variable. देखो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है कि नहीं, r एक ही वेरिएबल है, इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं. तो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एफ डेस ऑफ आर फाइंड करना होगा. तो देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं एफ डेस ऑफ आर फाइंड कर रहे हैं. एफ डेस ऑफ आर क्या मिलेगा, पावर एट फ्रंट यानी कि 2 1 minus pi r by 2 reducing one power into derivative of this. What is the derivative of this? Derivative of 1 is 0, but here it is minus pi and denominator में 2 तो है ही, so it is minus pi by 2 plus 2 pi r. So this is our f dash of r, right? So now we are going to compare f dash of r with 0. F dash of r is equals to 0. So now 2 gets cancelled and we are going to take pi common. So let us write this 1 minus pi r into minus pi by 2 is equals to minus 2 pi r. Minus 2 pi r, because 2 pi r goes to right hand side, so it becomes minus 2 pi r. Pi gets cancelled, minus gets cancelled, so 1 by 2 is multiplied with this, so 1 by 2 minus pi r by 2 is equals to 2r. So therefore 1 by 2 is equals to, r is common, this term goes to right hand side, 2 plus pi by 2. It means 1 by 2 is equals to r. 2 is LCM, 4 plus pi. 2 gets cancelled. Therefore, r is equals to 1 upon 4 plus pi. R is equals to 1 upon 4 plus pi, which is the critical point for us. So this is the critical point, and now we want to find the x. देखो अब यहाँ पे हमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में नन ऑफ दिस नहीं दिया गया है. तो ये पॉइंट पे हमको पूछा है कि ये जो है ये कौन सा पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट ही होगा, क्योंकि नन ऑफ दिस ऑप्शन में नहीं है, तो ये मैक्सिमा तो हो ही नहीं सकता. ये क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होगा, मिनिमम ही होगा, राइट. अगर यहाँ पे हमें दो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं तो हमें बट ऑब्वियस चेक करना ही पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव टेस्ट है. लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, वन एंड ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट मिला है वो मिनिमम पॉइंट ही होगा. यहाँ पे डबल डेरिवेटिव टेस्ट करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट. अगर आप बोर्ड की एग्जाम्स फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव टेस्ट से हम चेक करते थे, एनसीईआरटी में हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट से ये चेक करते थे कि ये जो मिला है सॉरी ये जो मिला है वो लोकल मिनिमा है या नहीं, तो वहां पे हमें चेक करने की जरूरत थी. लेकिन यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में नन ऑफ दिस नहीं दिया गया, राइट. सो चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू भी निकाल देते हैं, क्योंकि ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि एक्स एंड आर का रिलेशन ही निकालना है. हमने बेसिकली क्या करना है, एक्स एंड आर का रिलेशन निकालना है. तो एक्स एंड आर का रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम आर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट. सो एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस पाई इंटू 1 अपॉन 4 प्लस पाई upon 2. So 4 plus pi is LCM. Now 4 plus pi is multiplied with this 4 plus pi minus pi. ये दोनों कट हो गया, यहाँ पे रह गया 2. So x is equals to 2 into 1 upon 4 plus pi. 2 into 1 upon 4 plus pi. What is 1 upon 4 plus pi? Is basically r. So x is equals to 2r is the answer for our question. And x is equals to 2r is present in your B option. So x is equals to 2r, right? So please take a screenshot of this.
Okay, let's move forward. Everyone got it or not? Same question as per given in NCERT textbook, right? So you can understand this question. Okay, great. So question number 35. In the 35th question, this question is from JEE Advanced 2016. Very easy type of question is there. The list value alpha belongs to R. The list value minimum value फाइंड करनी है अल्फा की, और हमें क्या दिया गया है, for which 4 alpha x square, for which 4 alpha x square 4 alpha x square plus 1 upon x must be greater than or equal to 1 for all x is greater than 0. Okay, right? X must be greater than or equal to greater than 0. So the options are 1 upon 64, 1 upon 32, 1 upon 27 and 1 upon 25. So we have this function f of x. F of x is equals to 4 alpha x square plus 1 upon x. हमें क्या अल्फा की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए अल्फा की वैल्यू निकालनी है. द फंक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू कौन सी वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. ये वैल्यू कौन सी वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट? सो हमें मिनिमम वैल्यू हमें पता है, तो मिनिमम वैल्यू की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो. चलो अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं. एफ डेस ऑफ एक्स ये क्या हो जाएगा, 8 अल्फा एक्स माइनस 1 upon x is given, yes, so it will become minus 1 upon x square, right? So comparing f dash of x with 0, we will get here 8 alpha x is equals to 1 upon x square. It means x cube is equals to 1 upon 8 alpha. Taking cube root both the side, we will get here 1 upon 2 alpha raised to 1 by 3. देखो क्यूब रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड, 2 का क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट 2, अल्फा का क्यूब रूट अल्फा raised to 1 by 3. So this is the critical point for us. So now if this is a critical point, then the value at this critical point is 1. Value at this critical point will be 1, right? So हमें यहाँ पे f of x, x की वैल्यू क्या है, f of 1 upon 2 alpha to the power 1 by 3 is equals to 1. देखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमें दी गई है, इसलिए हम ये क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 1 रख रहे हैं. देखो क्रिटिकल पॉइंट यानी कि x की ये वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन मिनिमम होगा, और वो मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, 1 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. तो अच्छे से समझना, ये जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है यहाँ पे डबल डेरिवेटिव टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है और क्वेश्चन में भी गिवन है कि ये मिनिमम है, तो फिर डबल डेरिवेटिव टेस्ट करके हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट? सो डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू हम 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट? क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दिस ऑप्शन गिवन नहीं है, इसलिए अगर नन ऑफ दिस दिया होता तो हमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट से कंपलसरी चेक करना रहता, राइट? सो चलो x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 4 अल्फा x स्क्वायर यानी कि this square is 1 upon 4 alpha raised to 2 by 3 plus 1 upon x यानी कि 1 upon 1 upon x की वैल्यू ये है ना, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा. तो देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 alpha raised to 1 by 3 is equals to 1. अब ये 4 4 कैंसिल हो गया, अल्फा रेस टू 1 है, अल्फा रेस टू 1 minus 2 by 3, it means अल्फा रेस टू 1 by 3. 1 minus 2 by 3 is 1 by 3 plus 2 alpha raised to 1 by 3 equal to 1. It means 3 alpha raised to 1 by 3 equal to 1. It means alpha raised to 1 by 3 is equals to 1 by 3. Taking cube both the side, we will get here 1 by 27.
So answer for alpha is 1 by 27. This is the question which came in JEE Advanced 2016. So you can see the level of the question of advanced paper. Very easy type of question is there. Okay, so let's start the next question. Question number 36. Okay, please take a screenshot of this. Okay. Now question number 36. And the 36th question is JEE Mains 2017 question. 20 meters of wire is available for fencing a flower bed in the form of circular sector. अब देखो circular sector यानी कि ऐसा कोई sector है, सर्कल का अगर कोई पार्ट आप कट कर लेते हो, this is looking like pizza, right? So pizza is a sector of a circle, right? So this is the sector of a circle. 20 meters of wire is available for the fencing of this flower bed. It means the total length of this perimeter is 20 meters given. Perimeter of, देखो मैं गिवन डेटा डायरेक्टली करेक्ट कर रहा हूँ, राइट? यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, अच्छे से समझना कैसे कलेक्ट कर रहा हूँ गिवन डेटा. पेरीमीटर ऑफ फ्लावर बेड is equals to 20 meters given. Perimeter of the flower bed is 20 meters given. Then the maximum area of the flower bed is, हमें क्या करना है, ये फ्लावर बेड को फेंसिंग करना है और इसके फेंसिंग के लिए हमारे पास टोटल वायर कितना अवेलेबल है 20 मीटर. लेकिन हमें ये फ्लावर बेड जो है वो मैक्सिमम एरिया होना चाहिए, ये फ्लावर बेड का एरिया मैक्सिमम होना चाहिए. तो मैक्सिमम एरिया कितना पॉसिबल है ये फाइंड करना है. सबसे पहले तो ये जो सेक्टर आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा, राइट? यहाँ पे देखो ये जो है वो क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ द आर्क. दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क. दिस इज व्हाट, दिस इज द रेडियस. This is also a radius. So total perimeter is what? Radius plus length plus radius. It means 2 times radius plus length of arc is equals to 20. 2 times radius plus length of arc is equals to 20. Let us say that the angle made at the center is theta. Let us say that the angle made by this arc at the center is theta. Now what is the length of arc? Length of arc will be r theta. L is equals to r theta. Equation of length of arc is equals to r theta, right? So ये r theta कहाँ से आया है तो आपको पता ही होगा कि अगर ये जो पूरा एंगल है, अगर ये पूरा सर्कल होता, राइट? ये हमारे पास फुल सर्कल है, तो ये फुल सर्कल की आर्क अगर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक की आर्क हम कंसीडर करें तो ये आर्क में सेंटर पे कितना एंगल बनाया होगा? ये आर्क में सेंटर पे 2 पाई एंगल बनाया होगा कि नहीं? और ये जो आर्क की लेंथ है, ये लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. सो व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल? इट इज 2 पाई आर. इट मींस for 2 pi angle length of arc is, for 2 pi angle length of arc is 2 pi r. Then for theta angle, how much length of arc? So L is equals to 2 pi r theta upon 2 pi. 2 pi gets cancelled, so it is r theta. It means the length of arc is equals to r theta. So we are going to substitute here. R theta is equals to 20. R theta is equals to 20.
नाउ आवर टारगेट इज गिवन, राइट? टारगेट मींस जिसे भी हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है उसे हम टारगेट बोलेंगे। हमें यहाँ पे एरिया जो है वो मैक्सिमाइज करना है, तो एरिया यहाँ पे ये जो फ्लावर बेड है, फ्लावर बेड का एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया जो है वो कौन सा है, यहाँ पे माइनर सेक्टर हमें दिखाई दे रहा है। ये माइनर सेक्टर का एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये भी हम फुल सर्कल के कॉन्सेप्ट के ऊपर से ही फाइंड करेंगे। देखो, अगर जो ये आर्क है, ये आर्क अगर पूरा सरकमफ्रेंस होगा, यानी कि सरकमफ्रेंस ने कौन सा एंगल बनाया होगा सेंटर पे, 2 पाई। अगर 2 पाई एंगल है तो एरिया ऑफ द आर्क इज पाई आर स्क्वायर। अगर 2 पाई एंगल है तो एरिया ऑफ द आर्क इज पाई आर स्क्वायर। बट हियर द एंगल इज थीटा गिवन, सो at theta angle what is the area? So area of the arc, area of the minor sector is equals to pi r square theta upon 2 pi. Pi gets cancelled, so it is r square theta by 2. R square theta by 2. So our target is clear here. So area is equals to what? R square theta by 2. R square theta by 2. So in this area we have two variables r and theta, right? देखो एरिया ही मिनिमाइज करने को बोला है ना हमें, राइट? क्या बोला है यहाँ पे, सच दैट द मैक्सिमम एरिया, एरिया को मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज नहीं करना है, एरिया को हमें मैक्सिमाइज करना है, राइट? सो ये थीटा को भी हम आर के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर ले, देखो थीटा को अगर मैं आर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आर थीटा इज इक्वल्स टू 20 minus 2r, r theta is equals to 20 minus 2r, therefore theta is equals to 20 minus 2r upon r. थीटा इज इक्वल्स टू 20 माइनस 2r अपॉन r। तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, r स्क्वायर बाई 2, 20 माइनस 2r अपॉन r, 20 माइनस 2r अपॉन r। तो ये एक r कट हो गया। अब इसको अगर मैं 2 से डिवाइड, r बाई 2 से, r बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बचेगा यहाँ पे 10r माइनस r into r is r square, 2 gets cancelled, so 10r minus r square is our area, and this area is available in one and only one variable, so target is clear. So we are going to find dA by dr because we want to find the critical point. So dA by dr is equals to what, 10 minus 2r, comparing it with 0, so we will get here r is equals to 5, r is equals to 5 units, right? So radius is 5 units, so 10 minus 2r। अब देखो अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा तो -2 मिलेगा, -2 यानी कि लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है तो ये पॉइंट है वो मैक्सिमम पॉइंट ही होगा कि नहीं, तो ये मैक्सिमम पॉइंट है हमारे लिए। तो ये मैक्सिमम पॉइंट पे हमें एरिया निकालना है। एरिया का इक्वेशन तो हमारे पास है, तो r की वैल्यू हम सिंपली यहाँ पे 5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एरिया मिल जाएगा। एरिया इज इक्वल्स टू 10 into वैल्यू ऑफ r इज 5 minus r square is 25, so 50 minus 25 is equals to 25 square units. So required maximum area of the flower bed will be 25 square units, right? So very easy type of question, but you have to understood these two things. The length of the arc is r theta and the area of the sector, is r square theta by 2, right? You can also derive the equations from the simple logic. L is equals to r theta and A is equals to r square theta by 2, right? So this is the concept behind this. ओके चलो एक बार अच्छे से देख लो क्वेश्चन को, समझ लो कि क्या किया है हमने। अगर कोई भी मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले हमें गिवन थिंग्स कलेक्ट करनी होगी। गिवन थिंग्स कलेक्ट करने के बाद हम टारगेट फिक्स करेंगे, टारगेट हम उसी को बोलेंगे जिसको हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। और खास आपको याद रखना है कि जो भी टारगेट होगा वो टारगेट वन एंड ओनली वन वेरिएबल के टर्म में होना चाहिए। इसलिए जो भी गिवन थिंग्स है उसमें से अनदर वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाएंगे और वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर उसमें एक ही वेरिएबल आएगा तो वो टारगेट हमारा रेडी है डेरिवेशन करने के लिए, सो हम डिफरेंशिएट करके उसे 0 से कंपेयर कर देंगे तो क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट को फिर से हम फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा, राइट? सो दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। So please take a screenshot of this
and let's start the next question. Everyone got it or not? Let me know in comment. Got it, everyone? Okay, great. ओके चलो तो फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. So the next question is problem number 37, which came in the exam JEE Mains 2017. Problem number 37. In this problem, the normal to the curve y normal, देखो यहाँ पे क्या बोला है, normal to the curve y into x minus 2 into x minus 3 is equals to x plus 6 at the point where the curve intersects the y-axis. At the point where the curve intersect the y-axis, यानी कि ये कर्व y-axis पे जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट पे हमें नॉर्मल निकालना है, राइट. intersect the y-axis is passes through, बराबर. ओके सो passes through बोला है, passes through. तो ऑप्शंस यहाँ पे कंपल्सरी लिखने पड़ेंगे. ऑप्शंस -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, 1/2, 1/2. C option is 1/2 minus 1/3, and D option is 1/2, 1/3. So these are the options for the question. So first of all, we want to find the point, which point on y-axis. If any point is lying, let me draw a curve. The curve is something looking like this type of curve. I randomly. Okay, so this is the point of intersection on y-axis. If the point is lying on y-axis, then the x coordinate of this point is 0. So first we have to substitute x is equals to 0 in this equation. X is equals to, for finding the point of intersection with y-axis, right? So यहाँ पे हमें point of contact मिल जाएगा. Point of contact find करने के लिए हमें x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करनी है. तो x की वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, x यानी कि 0 -2 हो गया, ये हो जाएगा -3, और ये तो 6 है ही हमारे पास. तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी -1, राइट. सो सॉरी +1, बिकॉज माइनस 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 प्लस. सो दिस इज द पॉइंट 0 1 0 1. एट दिस पॉइंट 0 1 वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यानी कि हमें नॉर्मल निकालना है. यहाँ पे नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें मिल गया है. सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 0 1 है. यहाँ पे नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे dy/dx फाइंड करना होगा. तो dy/dx फाइंड करने के लिए मैं इक्वेशन में से y को सब्जेक्ट बनाता हूँ. तो यहाँ पे बचेगा x + 6 अपॉन x - 2 इंटू x - 3. तो ये हो जाएगा x + 6 अपॉन x² - 5x + 6 हो गया. अब देखो dy/dx करने के लिए क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट रूल से हम dy/dx फाइंड कर सकते कि नहीं. Denominator at front, derivative of numerator. So what is the derivative of numerator? It is 1 plus minus numerator at front. Derivative of denominator is 2x minus 5 upon denominator square. It means x² minus 5x plus 6 whole square. So now we want to find dy/dx at point x is equals to 0. देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0.
तो 0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस, सो 6 5 30 अपॉन 0 0 6 स्क्वायर इज 36, यानी कि 36 अपॉन 36 यानी कि 1। सो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर हमारे पास 1 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1, because tangent and normal are perpendicular to each other, therefore slope of normal becomes -1। so slope of normal भी है हमारे पास, point of contact भी है, तो हम नॉर्मल का इक्वेशन भी निकाल सकते हैं कि नहीं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y minus y naught is 1 is equals to m into x minus x naught is 0, therefore y minus 1 is equals to minus x, it means x plus y is equals to 1, x plus y is equals to 1। तो देखो ये नॉर्मल का इक्वेशन हमें मिल गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, passes through, normal is passes through which option, so we are going to substitute this option in this line, which option is satisfying this line, -1/2 plus -1/2 becomes -1, so ultimately a is not the answer, so 1/2 plus 1/2 is equals to 1, yes b is the answer, 1/2 minus 1/3 which is not equal to 1 and this is also not equal to 1, so answer for this question is 1/2, 1/2, right। so सबसे पहले हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना होगा, नॉर्मल का इक्वेशन मिल गया है, so नॉर्मल कौन से पॉइंट में से पास कर रहा है ये फाइंड करने के लिए हमें ऑप्शंस को नॉर्मल के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है, जो भी ऑप्शन नॉर्मल का इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर होगा। so इजीली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1/2 इज आवर आंसर, राइट। Okay, so please take a screenshot of this question. Now our problem number 38, which came in JEE Mains 2018. चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। Problem number 38. In this problem, let f of x is equals to x square plus 1 upon x square and g of x is equals to x minus 1 upon x. X belongs to r minus minus 1 0 1 if h of x is equals to f of x upon g of x, h of x is equals to f of x upon g of x, then local minimum value of h of x is blank. This is the question from 2018 JEE Mains. Okay, so now we want to find the local minimum value and the options are -3, -2 root 2, 2 root 2 and 3, right? So these are the options. Now first of all, h of x is equals to, this can be written as substituting f of x and g of x in this function, x square plus 1 upon x square upon x minus 1 upon x। देखो अब यहाँ पे हम इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्वोशंट रूल की हेल्प से यहाँ पे डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जो है उसे डिनोमिनेटर जैसा बनाएंगे। तो देखो ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं, x माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर
x माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर क्या होगा, x माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, लेकिन हमने एक्स्ट्रा क्या किया है, माइनस टू किया यहाँ पे, तो माइनस टू एक्स्ट्रा किया है तो उसे लेवल करने के लिए हमें प्लस टू भी ऐड करना होगा कि नहीं। तो मैंने सिंपली क्या किया यहाँ पे कि x माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर कर दिया है, तो इसमें मिडिल टर्म आ रहा है माइनस टू, लेकिन यहाँ पे माइनस टू प्रेजेंट नहीं है तो मैंने प्लस टू करके इसका लेवल कर दिया है। अब देखो x माइनस वन अपॉन एक्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में, अब यहाँ पे हम लेट कर रहे हैं कि x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी, लेट दैट इससे हमारा कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। लेट दैट x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी, इट मीन्स h of t is equals to t square plus 2 upon t square plus 2 upon t, यानी कि ये हो गया हमारे पास t plus 2 upon t. So this is the function. Basically we can convert this function into this function. So now what is h dash of t? For finding maximum or minimum value we have to find derivative of this function h dash of t. So 1 minus 2 by t square, derivative of 1 upon t is minus 1 upon t square. So 1 minus 2 upon t square. Comparing h dash of t with 0, for critical points we can compare this with 0, we will get here t square is equals to 2, therefore t is equals to plus or minus root 2, t is equals to plus or minus root 2, right? So सबसे पहले हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, h डबल डैश ऑफ t is equals to h डबल डैश ऑफ t is equals to देखो यहाँ पे क्या होगा, वन का डेरिवेटिव तो जीरो हो गया, ये क्या है हमारे पास माइनस टू, देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, वन माइनस टू टी रेस टू माइनस टू, तो ये माइनस टू पावर आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस फोर टी टू दी पावर, एक पावर रिड्यूस होगा यानी कि माइनस थ्री टी टू दी पावर माइनस थ्री, यानी कि फोर अपॉन टी क्यूब आ गया यहाँ पे। तो h डबल डैश ऑफ t हमारे पास ये है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, लोकल मिनिमम। सो मिनिमम वैल्यू के लिए हमारे पास डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो कब आएगा, t की वैल्यू अगर हम रूट टू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो h डबल डैश ऑफ t इज ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा कि नहीं, देखो ये ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो इसकी तो हमें सिर्फ साइन ही निकालनी थी, राइट। सो टी की मेन वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, रूट टू, क्योंकि रूट टू पे डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है और मिनिमम के लिए डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सो टी इज इक्वल्स टू रूट टू इज our answer, but we have to substitute this in the function. So h of root 2 is equals to t means root 2 plus 2 upon root 2. 2 upon root 2 means it is root 2. So root 2 plus root 2, 2 root 2. So h is equals to 2 root 2. So 2 root 2 is our answer for this question. Okay, चलो एक बार फिर से समझ लो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखो इसका अगर हम डेरिवेटिव करके सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट चेक करेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपको कॉम्प्लिकेशन दिख रहे हैं। ये इसको हम सिंपली क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर बनाएंगे, x माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस टू कर दिया है x माइनस वन अपॉन एक्स, और बाद में हम लेट कर रहे हैं कि x माइनस वन अपॉन एक्स है वो t है, यानी कि फंक्शन h ऑफ t हो गया t स्क्वायर प्लस टू अपॉन t, h ऑफ t इज इक्वल टू t प्लस टू बाई t। अब इसका डेरिवेटिव कर दिया हमने वन माइनस टू बाई टी स्क्वायर, और ये है वन माइनस टू टी रेस टू माइनस टू। सो सबसे पहले मैं इसको जीरो से कंपेयर करूंगा तो हमें ये क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, लेकिन हमारे पास टू क्रिटिकल पॉइंट्स है, इसलिए हमें डबल डेरिवेटिव से चेक करना होगा कि कहाँ पे मिनिमा है कहाँ पे मैक्सिमा है। अगर यहाँ पे मैक्सिमा पूछा होता तो मैक्सिमा कौन से पॉइंट पे मिलता, t इज इक्वल टू माइनस रूट टू पॉइंट पे हमें मैक्सिमा मिलता, राइट। t इज इक्वल टू माइनस रूट टू पॉइंट पे हमें लोकल मैक्सिमा मिलता, राइट। ओके, सो t इज इक्वल टू माइनस रूट टू सब्स्टिट्यूट करते तो यहाँ पे लेस देन जीरो आता, यानी कि ये लोकल मैक्सिमा हो जाता। ओके चलो, तो ऐसे करके हमने t इज इक्वल टू रूट टू फाइंड कर लिया और फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके हमें टू रूट टू मिल गया है। ओके, तो एक बार अच्छे से इसे देख लो।
देखो यहाँ पे जो ये वैल्यू मिल रही है ना, ये कौन सी वैल्यू है, लोकल मिनिमम वैल्यू। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो यहाँ पे देखो लोकल मैक्सिमा कौन से पॉइंट पे, t इज इक्वल टू -√2। सो -√2 पॉइंट पे अगर आप लोकल मैक्सिमा फाइंड करोगे ना तो लोकल मैक्सिमा कौन सा मिलेगा, -√2 -2/√2, इट मींस -2√2। तो देखो ये जो है वो क्या है, लोकल मैक्सिमा। देख सकते हो आप यहाँ पे लोकल मैक्सिमा जो कि लोकल मिनिमा से बड़ा है, राइट। सो लोकल मैक्सिमा कैन बी अ ग्रेटर देन लोकल मिनिमा, राइट, ऐसा हो सकता है। लोकल मैक्सिमा कैन बी अ ग्रेटर देन दिस नंबर। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसा कब होगा। तो ऐसा कोई कर्व है हमारे पास, ये देखो ये पॉइंट है वो कौन सा है, लोकल मैक्सिमा पॉइंट है कि नहीं। ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट कौन सा है, लोकल मिनिमा पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है, लोकल मिनिमा पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है, लोकल मैक्सिमा पॉइंट है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो लोकल मिनिमा पॉइंट है ना वो लोकल मैक्सिमा से बड़ा है, तो ये पॉसिबल हो सकता है, राइट। सो लोकल मिनिमा कैन बी अ लेस देन लोकल मैक्सिमा, राइट। सो यहाँ पे लोकल मिनिमा आपको लोकल मैक्सिमा से बड़ा मिल रहा है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। इस टाइप का अगर कोई कर्व हो तो यहाँ पे लोकल मिनिमा मिल रहा है, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, लेकिन आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि लोकल मिनिमा जो है वो लोकल मैक्सिमा से बड़ा है। सो इट कैन बी पॉसिबल। चलो अब समझ में आ गया सबको, गॉट इट एवरीवन। ओके सो अब हम आगे बढ़ते हैं। स्मिथ भट्टी, गॉट इट और नॉट। Okay, let me explain one more time for Chintu. H of x is equals to x square plus 1 upon x square x minus 1 upon x। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसका अगर आपको डायरेक्टली फाइंड करना है तो डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो इससे डबल हो जाएगी, बस इतना ही होगा, राइट। यहाँ पे आप कोसेंट रूल डायरेक्टली अप्लाई कर दो और उसको जीरो के साथ कंपेयर कर दो, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, डबल डेरिवेटिव टेस्ट कर लो, उसके बाद वैल्यू एक्स की सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा, अच्छे से ही मिलेगा, आंसर सेम मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पे ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस मेथड को लेंदी नहीं बनाना है, राइट। सो x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 ऐड करना होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे -2 नहीं था। देखो इसका अगर हम एक्सपांड करें तो एक्सपांशन से हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिल रहा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिल रहा है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे जो -2 है वो -2 नहीं है, तो -2 ऐसे एक्स्ट्रा तो हम ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हमें +2 ऐड करना होगा। तो ये दोनों कट हो गए, यानी कि यहाँ पे भी मैंने +2 ऐड करना होगा, तो मैंने यहाँ पे +2 ऐड कर दिया है क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए इसलिए, और x माइनस 1 अपॉन एक्स कर लिया। अब सेपरेट दे देते हैं, और x माइनस 1 अपॉन एक्स को हमने t ऐड कर लिया है, सो h ऑफ t इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन t, टी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन t। अब देखो सेपरेट, सो ये हो जाएगा t प्लस 2/t। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव h डैश ऑफ t इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन t का डेरिवेटिव 1 अपॉन t स्क्वायर। तो ये फंक्शन अब t के टर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, राइट। सो h डैश ऑफ t को हम 0 से कंपेयर कर देंगे तो t स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि t की वैल्यू प्लस और माइनस √2 आ गई। अब डबल डेरिवेटिव करके हमें क्या मिलेगा, डबल डेरिवेटिव 4t रेस टू -3 आ गया, तो यहाँ से हमने डबल डेरिवेटिव किया है, तो ये h डैश ऑफ t के ऊपर से हमने डबल डेरिवेटिव किया तो हमें ये मिल गया।
और ये हो गया 4/t³ तो t इज इक्वल टू √2 पे ही ये पॉजिटिव होगा क्योंकि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू के लिए डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 हमें कहां पे मिलेगा, t इक्वल टू √2 पे, तो ये हमें ग्रेटर देन 0 मिल गया। अब ये अगर ग्रेटर देन 0 मिल गया है तो हम क्या करेंगे कि t इज इक्वल टू √2 पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट हो गया हमारे लिए, लोकल मिनिमा पॉइंट। So we want the local minimum value. So we have to substitute t in this form, t in this equation, right? So h is equals to √2 plus 2 by √2 is equals to √2 plus √2, it becomes 2 √2. So it is the local minima. And if they are asking for local maxima, then we have to take t is equals to minus √2. So if we take t is equals to minus √2, then local maximum value is minus 2 √2. तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल हो रहा है कि लोकल मिनिमा जो है वो लोकल मैक्सिमा से बड़ा मिल रहा है, ये लोकल मिनिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है, तो लोकल मिनिमा जो है वो लोकल मैक्सिमा से बड़ा मिल सकता है, लेकिन हमारा आंसर तो यही होगा क्योंकि हमें पूछा गया है लोकल मिनिमम वैल्यू, राइट। सो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इस टाइप का अगर ग्राफ होगा तो लोकल मिनिमा कैन बी ग्रेटर देन